So yeah, again, let's cover up some bank nifty expiry move in the last moment in 2:30. Right in the morning itself, when I took a session, I already said कि morning में जो bearish engulfing बनाया था, it created a issue and technically थोड़ा सा मतलब profit booking के लिए मैंने बोला था, but I already said कि एक बार इफ यू सी द रीजन की 680 का लेवल जो मैंने आपको दिया था, 22,680 का लेवल जो था, इट वाज अ डिसाइसिव मार्क कि एक बार वो तोड़ता है तो देन वी कैन अगेन गो फॉर अ सेलिंग साइड ऑन। फिर सेकंड कैंडल इफ यू सी 9:30 एंड 10 ओ क्लॉक का जो कैंडल था, दैट वाज वीक इन टेक्निकल्स एंड दैट क्रिएटेड अ बेयरिश एंगल्फिंग। एंड आफ्टर क्रिएटिंग अ बियरिश एंगल्फिंग, एक स्लोली एंड स्टैगर्ड बाइंग आया था, बट इट गॉट सैचुरेटेड अपसाइड उसी लेवल पर जहां पर मैंने बोला था, इट वाज 22,680 690 के आसपास, वापस वहीं पर आया एंड देन अगेन इट केम अप टू सेलिंग फ्रॉम दैट लेवल ओनली। सो इफ आई से 22,680 का जो लेवल्स है, दैट इज अ इमीडिएट रेसिस्टेंस। सो आई वुड से ये तो निफ्टी की बात हुई। टॉकिंग अबाउट द बैंक निफ्टी का भी सेम वही चीज है। 74,820 का जो लेवल्स है, इफ यूल से ऑन द प्रिसाइज नोट, 74,800 का जो लेवल्स है, दैट इज अ रेसिस्टेंस क्रिएशन एंड वहां पे थोड़ा सा इशू क्रिएट कर रहा है। एंड आई वोंट से कि जब तक ये नहीं निकलता तो फ्रेश तेजी हम लोग फोकस कर सकते हैं। सो इट्स बिलो दैट 74,800 के तो काफी नीचे है, वहां से 500 पॉइंट नीचे है एज ऑफ नाउ। इफ यू सी द 15 मिनट्स कैंडल एंड 1 बजे के बाद जो कैंडल बना रहा है, इट इज द सेम कैंडल, एक कंसोलिडेशन फेज में जा रहा है। बट आई विल से इफ आई ट्रैक ऑन द स्ट्राइक्स, सो आई ट्रैक ऑन स्ट्राइक्स 4700, सॉरी 7400, 74,400 के आसपास का हम लोग स्ट्राइक लेते हैं एंड 300 ऑल्सो वी आर इन कीपिंग इट एज अ फोकस। So 74, 300 and 400 is in focus, but I will still prefer to make it 74, 300. That is in focus right now, but I will give a trade later on after seeing the follow on or something like that. So right now, 74, 300 is trading at 88. आई विल सी कि अगर ये मेरे को 65 या 75 के रेंज में इसमें मिलता है, तो आई विल सी टू टेक ऑन दिस ऑप्शन एंड अगेन ड्राइविंग दैट ऑप्शन टू 100 एंड 120 के लेवल्स पे आप देख सकते हैं उसको। बट द बाइंग रेंज विल बी, आई विल स्ट्रिक्टली री अनाउंस कि द बाइंग लेवल विल बी नियर टू अबाउट 65 टू 75, बट ऑन अ 70 रुपए के भाव से भी देख सकते हो ऑन अ मीडियम साइड। तो let's take on some right now it's 77, 76. So if you want to focus that option around 70, that will be a fine range. So okay, so taking as a stop loss, or if you want to, yeah, okay, so I just want to rearrange the level. ओके, आई वुड लाइक टू रीअरेंज द लेवल। एक बार ये वापस 60 के आसपास आता है, देन ओनली वी विल बी टेकिंग द बाइंग स्टांस। सो आई टुक इट 65 टू 75, बट आई विल रीअरेंज एंड से कि एक बार वापस ये 65 या 60 के आसपास भी मिलता है, तो देन ऑल्सो वी कैन टेक ऑन द एग्जीक्यूशन रेंज ओवर देयर। सो राइट नाउ इट्स नियरली अबाउट 75 टू 80 के बीच में चल रहा है। लेट्स take a pause and let's wait. You can even put your play orders over there at near to 60 or 55, 60 and 65 के आसपास 10 रुपए का रेंज है। आप लोग वहाँ पे अपने ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिस्क प्रोफाइलिंग। इफ विल समवन से कि आई एम अ रिस्क टेकर या फिर आई जस्ट वांट टू ट्रेड एग्रेसिव, देन यू कैन प्लेस ऑन नियर टू 60 और 65 के आसपास भी रख सकते हो अपना ट्रेड बाइंग के लिए। If someone is conservative, then they can take on near to about 55 to 60. So that's what we are taking a plan right now. And Aniket, sir, we can't see your screen if you're sharing. Since yes. you talk about candles, I guess you were in the flow, तो मैंने आपको disturb नहीं किया. Okay. I missed the screen share. Okay. Can you see the So right now, guys, we are tracking 74, 300 and buying range is 60 to 65. And yes, sir, we can see your screen. So this is my screen right now, and it's a 15 minutes candle. And what I'm taking for a range is, I think it was audible clearly to everyone. What I took a range for a trading in Yes. Sensex. So I'll again repeat, 74 300 का range है, and you should focus on put
47 300 का पुट शुड बी इन फोकस, एंड वी आर सीइंग कि एक थोड़ा सा डिप मिले तो देन वी कैन गो फॉर अ बाय, एंड upside range for the option can be near to about 100 or 120. So let's some wait for some execution in option according to our range what we have suggested. Till then, if anyone wants to ask for the stocks, then they can go for the stocks as well. So, so we have one query about BEL. BEL 235 कॉल ले सकते हैं क्या? Sorry, BEL. BEL 225 कॉल ले सकते हैं क्या? Okay. So as of now, I'll repeat again. I think I got a query from someone. So someone is asking SL. So I think I'll be giving you SL only when the price range is there. And जैसे ही मेरा बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है नियर टू अबाउट 60 या 65 के आसपास एग्जीक्यूट होता है, देन ओनली आई विल बी, या द ऑप्शन इज राइट नाउ 63. So the aggressive, if someone is aggressive taking the option, so it's nearly about 60 now, so you can take it from here. And I would say कि the SL should be kept at 25 or 20 के range में आप रख सकते हो, 25 to 20. And taking upside as a range, you can take 110 or 120 का target आप ले सकते हो. So I think it's in execution range right now 55 से 60 जो conservative zones है. If someone wants to take on the conservative side, then this is the range for you guys. And so let's wait. Hopefully, everyone must have placed their orders and trying to execute on the range. And let's wait for a uptick, and we might get some good chunk, as you people are asking to have it. We have pinned the message for Diti, you can check, and just repeating. Sensex 74 300 put, buying range 60 to 65, stop loss 25, target 110 to 120. तो ये हमारा आज का ट्रेड है फॉर सेंसेक्स एक्सपायरी. So I would cover up some index, sorry, queries. Yeah, so I got a query regarding BEL. So BEL, I think technically it is positive, and I would say कि if someone wants to trade for a weekly prospect, then this is the best time you can take it, just because कि technically very positive है. I think taking a support near to about I would say support to 28 to 27 के आसपास का रख सकते हैं for a trading range. For a weekly range you can take 227 से 225 का range है नीचे की तरफ, but which is a support zone. And I would say that is fine for a support, and upside is capped near to about 245. Sorry, 245. So 245 is the ultimate target what we are looking. So I would see it very positive. As well as एक upside जो cap बनाया था ना 235 का, that is fine, but I still see this is a positive move. And so the price option has moved up to 70. That's a quite spike, very nice. And the people who have executed from 55 to 60 range, which were conservative side, and 60 to 65, 72, 74, 78, 80 and 80, the price range has ended up over 80. And I would say कि जिसको भी if someone is conservative, you can take on आपका 25% का इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हो 80 and 82, 84, 83 के 84 right now. So the price is moving on a very 87 and 88. I saw a take of 88 as well on my system. So anyone who wants to book profit, they can book your profits. 90, 90, yeah, that's 90, 91, 92 tick also I saw over there. Very nice. And I would say कि conservative, if there is any conservative side people trading, so they can book their profits on the 50% side and keep their trailing stop loss if they want to take on the trailing stop loss. That is very fine. And the price range went to 94 up to. So Kritesh is saying, "Good job, sir. That's my job. To that's exactly my job." So that's ट्वेंटी fine. के प्रॉफिट.
Yeah. So anyone who wants to book profit, they can book profit according to the risk profiling. 94 again, 95. I gave a target of 110, but 97, 97, 106. That's boom over the options, and I would say कि you can book your profits, and that is a double of your profits. आज पैसा double हुआ है in just a 5 minute tick. I think near to about 70 to 80% तो अभी हुआ है. If someone was conservative and took on 55, तो उसका पैसा भी double हुआ है. So yeah, Mugambo खुश हुआ. Yeah, that's fine. So everyone must have enjoyed the Sensex expiry, and according to the technicals also, I said कि थोड़ा सा अटक रहा था, तो that was a clear stance where we can take a conviction over selling. तो हम लोग को सुबह से conviction था, and it gave up a move, and that was pretty fine. And आपको जो मैंने कैंडल पे दिया था, it was the same candle if you can see on the screen. सो इट वाज द अनिकेत कैंडल. सर रीएंट्री ले सकते हैं क्या? री एंटर सर करने के लिए अभी इट इट वाज हीरो जीरो का एक ही कंसेप्ट होता है, विच वाज अ सेम मोमेंट, मतलब एक मोमेंटम में देता है. बट इफ यू वांट टू ट्रेड ऑन अदर साइड, बट आई वुड नॉट से कि इतना ज्यादा अभी कुछ रह गया है मूव. सो इफ समवन वांट्स टू टेक एन एग्रेसिव रिस्क, तो दे कैन टेक ऑन 85 या 80 लेवल्स वापस लेके 90 और 100 के आसपास, टेकिंग ऑन 50 और 20 रुपीज का मूव आप ले सकते हो. So right now the option is also 96, but the second move is not recommended at first, just because कि पहला profit हम लोग को अच्छा हो गया है, तो rather not to take a trade. And 101 104 तक भी टिक देखा था, and 106 also I saw a tick. So if you have put your trade to exit, then you must have got a good profit. That's very fine for. I can see a lot of comments coming for the profit booking. So re-entry, I think that will be risky. Uh, that will be risky. So that is not suggested. So if someone wants to book profit में आप आगे रह सकते हो. Oh, my conviction. कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, काफी सारा प्रॉफिट हो गया है, राइट? ये अनिकेत सर की पहली एक्सपायरी थी हमारे साथ, जिसमें हमारा टारगेट डबल हुआ है. एंड ऑल्सो अनिकेत सर का इस हफ्ते का 5वां सेशन था. इट विल बी ग्रेट अगर आप थोड़ा सा फीडबैक ड्रॉप करें स्पेसिफिकली फॉर अनिकेत सर, उनको भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि पीपल इन द कम्युनिटी आर लविंग हिम. So he will work more hard and he'll ensure कि थोड़ा queries को भी थोड़ा और जल्दी आंसर कर पाए वो. So Anuj, you can take a screenshot of Pranav. He took a 90K of profit today. So that was a very good feedback for me. Thank you, Pranav, for getting a conviction and indulging in the trade on my conviction. So uh, yes, that's exactly my job. आप लोग जो लग रहे हो गुड जॉब, दैट वाज एग्जैक्टली माय जॉब. सो आई ट्राई माय बेस्ट टू मेक इट वट एवर इज the best in the market and best of everything. So Anuj, I think you got multiple. Feedbacks here. Well, that's Yeah. really great. मतलब it's great to see कि आपका पहला सेशन एक्सपायरी का आपके लिए भी अच्छा रहा, and people attending the first expiry So also had profits. Ashu Good to also get made 43K. people run. Ashu also made 43K. Very perfect, Ashu. And I think I'm not sure कि if you're conservative or aggressive. तो aggressive वाले का 90K तो मैंने देख लिया, but I'm not aware with the position sizing. But maintain position sizing according to your risk profiling only. There should not be any comparison कि if you want to make a money, आपको अगर 1 लाख रुपए भी बनाना है, तो मेंटेन अ प्रॉपर पोजीशन साइजिंग. ऐसा नहीं है कि इफ यू वांट ऑलरेडी हैव 1 लाख रुपीज इन योर बैंक एंड यू जस्ट वांट टू मेक 1 लाख रुपीज इन एन एक्सपायरी. So that will be quite बहुत ज़्यादा risky, and the thing should not be considered further. But if you have 5 to 7 lakhs, आप उसमें 1 लाख कमाना चाहते हो, then it is fine कि आप लोग को. That's why I'm saying कि position sizing is more important than taking a trade. So, sir, do we have an opportunity for another trade, or that will be the final trade for the day, and we will be taking some stock queries? So I'll be open for taking a stock query just because the options are in a very staggered range. एक range में ही है. We only get a trade when there is a candle movement or there is a start of candle, just because बीच में हम लोग नहीं दे सकते, but just we get our range
and we get a boom, an opportunity to exit. That's our move right now. So अगर second move अगर आता है तो I'll notify, but as of now we don't have any second trade, so I'll be open to take some stop queries. That will be fine for me. Also, Aniket sir, काफी लोग पूछ रहे हैं कि on what basis did we give this trade? Like, what was the thought process? आपने क्या analyze किया? Since we don't have any trade and we have some time, if you can explain the analysis behind the trade, that would be So really great. it's more about the quantitatives and the price action. So if we mix up all the quantitatives and the price action, just because I'll give an example कि there is both side writing चलता है FIIs का, the both sides are writing. तो if the price is sustaining on the lower range, अगर lower range पे sustain कर रहा है and the writers are getting trapped, so द राइटर्स आर नॉट इन द सेम कि एक लॉट दो लॉट या 10 लॉट में ऐसे वो लोग काम करते हैं, तो इट्स नॉट लाइक दैट. सो देयर इज अ बिग चंक ओवर सेलिंग साइड. तो कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन के बीच में बहुत चंक सेलिंग होती है इन द रेंज. सो इफ यू सी द मैक्सिमम हुए वो स्टैंडिंग नियर टू अबाउट 74 400 300 के आसपास के नीचे का राइटिंग था. So when that broke, so that was a right time to enter, where the writers will get their stop losses. So that is the pure trend or the pure thing what you should focus on, the level कि एक upside या downside पे अगर sustain कर रहा है and the writers are being trapped and the open interest is on high level and you see कि अभी कोई chance नहीं है for a bounce and again writers कटेंगे, तो that is the sharp move you can get over there. That's exactly what we captured right now. तो Sensex was on a lower note and you can see और नीचे की तरफ follow दे रहा था and the writers would have gone some एक उनके stop losses they have gone with endless thing, तो उसकी वजह से एक spike मिला. That's the pro analysis what we do in the real time. So guys, we don't have any sessions today. हमारा next session Monday सुबह होगा, वो भी अनिकेत सर का ही होगा. And afternoon में we'll have शंभू sir for the mid cap expiry. I can see काफी लोग पूछ रहे हैं next session कब होगा. And हमने एक BTST share किया है, that is already pinned up in message. देखते हैं हिंद कॉपर हमने already BTST share So किया है. metals are And positive. Yes, the index in the metals अनिकेत which सर are को ऑप्शन ट्रेड का सेशन कब होगा? मयूर ये जल्दी होगा, प्रोबेबली अगले मंडे या ट्यूसडे में हम आपको वो कंफर्म कर देंगे कि अनिकेत सर का वो सेशन कब होगा. so if you can see सवा 12 वाला candle, if you will see that is a big yellow that made my conviction where I gave a sell signal over there. So if the session would be near to about ढाई 12:30 1 बजे तो आपको एक बहुत बड़ा पैसा मिल सकता था. बट वी हैव अवर शेड्यूल, वी कैन नॉट हैव सेशन एवरी टाइम. तो वी हैव अवर शेड्यूल एट 2:30, सो वील ऑलरेडी हम लोगों ने 2:30 भी पैसा डबल ही किया है नियरली अबाउट. सो that's the perfect stance. As well as I was covering कि जो BTST what we have covered, एक BEL you can focus on the BTST side, वो बहुत अच्छा लग रहा है. टेक्निकली इट इज पॉजिटिव स्टांस एंड सेम एज हिंद कॉपर. अनुज आल्सो सेड हिंद कॉपर इज आल्सो पॉजिटिव एंड वी सी के 2 से 3% का आसपास का रिटर्न मिल सकता है. पीपल आई थिंक आई एम कंफर्टेबल टेकिंग एन, या ओके. सो 2 से 3% के आसपास का आपको रिटर्न मिल सकता है, दैट इज प्योरली फाइन. सो कविता बेन इज आस्किंग ये येलो कैंडल का क्या राज है? ये राज राज ही है. So तो काफी लोग बोल रहे हैं सेशन 2 बजे कीजिए. गाइस वी आर थिंकिंग ऑन इट, क्या हमें सेशन 2 बजे करना चाहिए, क्या हमें वो Anuj, नहीं करना चाहिए. I will comment on this कि सेशन 2 बजे हम लोग नहीं कर सकते. उसका रीजन है द ओपन इंटरेस्ट एंड द बाय एंड फ्लोज आर मोस्ट आफ्टर 2:30. क्यों 2:30 एंड 3 o'clock के बीच का जो गैप है ना, दैट इज अ डिसाइसिव मूव फॉर द राइटर्स कि आज पोजीशन लेकर जाना है फॉर अ वीकली साइड या नहीं लेके जाना है, या फिर दे हैव टू कट देयर पोजीशन. तो दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक अ डिसीजन आफ्टर 2:30 एंड 2:45 ओनली. सो दैट इज द प्योर मूव. 2 बजे से 2:30 के मूव नहीं आ सकता. एंड आई कैन नॉट से कि नहीं आ सकता, बट मोस्टली अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटेटिव वी कैन ओनली कमेंट आफ्टर 2:45 या 2:40 के आसपास. सो आई नो टेक्निकली दिस इज सेंसेक्स लाइव ट्रेडिंग, बट हमने थोड़ा जल्दी ही प्रॉफिट बना लिया है. राइट, बहुत अच्छी बात है वो. राइट नो वी डोंट हैव एनी ट्रेड, हमने कुछ स्टॉक क्वेरीज के लिए बीटीसी ऑलरेडी शेयर कर दिया है. एंड काफी लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं. सो आई गेस वी हैव अ पर्सनल क्वेश्चन अनिकेत सर.
if you can answer this, sir आपने क्या study किया है, हमें भी करना है कौन से institute से, और आपने क्या exam की preparation की, कैसे, like So how come you are here, आपने ऐसा क्या किया कि आज आप यहाँ पे live trading session ले रहे हैं Stockholm में? So when I came here, मैंने भी सर को ऐसे ही ट्रेड दिया था. तो सर was convinced over the same. And the jokes apart, so if you want to go in technicals, go for CMT, certified market technician. That is one of the proficient course, and that is most required and recognized over India, and we focus on that. Ki CMT, if someone is doing on the full fledged basis and getting a knowledge, so he can crack the technical knowledge, as well as they can crack their exposures into price action, market movement, and as well as the quantitatives. So that is all I have answered over this. अच्छा गाइस, इस पूरे हफ्ते हमारा सिर्फ एक सेशन जो कि निफ्टी का था वो हमारा लॉस में रहा, राइट, एंड बाकी सारे हमारे प्रॉफिटेबल रहे हैं. वी हैव स्टार्टेड, यू नो, वी हैव स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग द ट्रेड्स आल्सो, जैसा कि हमने आज के सेशन में किया, हमने कल के सेशन में किया. इट विल बी ग्रेट अगर आप स्टॉकहोम पर ओवरऑल स्टॉकहोम लाइव सेशन हमारे स्पेसिफिक एक्सपर्ट्स के नाम के साथ थोड़ा फीडबैक शेयर करें. दैट विल बी रियली अप्रिशिएटेड, सो दैट उनको भी थोड़ा मोटिवेशन मिले ज्यादा मेहनत करने का, एंड मेरे को ज्यादा पीछे ना भागना पड़े कि सर प्लीज टाइम दे दो, राइट, ऐसा नहीं है. But they are really happy to work with us and help you all start your own journey. Also, Stockholm is free for everyone, guys. Now you can share with your friends. Sir, confidential BTST कौन से आज ओपन कर रहे हैं? BTST नासिमा जी आप चेक कर सकते हैं. It is already pinned. एंड स्टॉकहोम का लिंक भी हमने शेयर कर दिया, जो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं. आई हैव जस्ट शेयर्ड इट एंड आई हैव पिन्ड इट, एंड आई कैन सी काफी लोग यहाँ पे लिख रहे हैं. गाइस यहाँ पे नहीं, आपको स्टॉकहोम में लिखना है फीडबैक, सो दैट वी कैन यू रिपीट द पोस्ट नेम प्लीज. अनिकेत सर, आई गेस दिस इज फॉर यू. Sorry, what needs to be? कोर्स नेम जो आप कोर्स का So नाम दिया था. I said CMT, so certified market technician, that is the course, and what Chandan sir also recommend is the same, and with the help of that only you can make an exposure into the same. कौन सा सेगमेंट लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है फॉर 6 मंथ्स? So if you want आई to मीन take on सेक्टर for दे आर 6 months, आस्किंग. the sectoral analysis for 6 months, I think PSUs and the reality might go. If I'll take on reality, so it can go for a next quarter. So 3 months का view रहेगा. If you take reality, if you take PSUs, then पूरा साल भर का view we are taking as a positive. If someone wants to take 3 months, 6 months, 9 months, 12 months, the PSUs are perfect right now. And for 3 months prospect, yeah, एक quarter का prospect है, then you can take on reality. So the reason behind I'm giving PSUs as a full conviction trade is that कि the budget will be coming in June जब सरकार बनेगी, and the I think you must be aware कि कौन बनेगा. I'm not aware कि I'm not taking any comment on the political so stance. So the most of the people know कि कौन आ सकता है कौन नहीं आ सकता है. तो that may be the reason कि PSUs are getting some hint, and the PSUs are getting some conviction in their budgets for allocation and positivity coming in near term for themselves. So the PSUs are the pack which we focus on for a very short term, medium term, long term, as well as ultra long term. So that is the ultimate pick for that. ऑल्सो गाइस, जैसे मैंने कहा कि प्लीज शेयर फीडबैक ऑन द स्टॉकहोम चैनल और आस्क अनिकेत पर आप कर सकते हैं. ऑल्सो एक छोटा सा पोल मैंने किया है. आई कैन सी दैट 10-15 पीपल हैव ऑलरेडी वोटेड इट. कैन जस्ट गो देयर एंड वोट कि आपको हमारे जो लाइव ट्रेडिंग सेशंस हैं वो कैसे लग रहे हैं, एंड हाउ वुड यू लाइक टू रिकमेंड. आपके नीचे चैट के बगल में ही यू कैन सी द पोल ऑप्शन. यू जस्ट गो देयर एंड वोट डायरेक्टली. इट्स वेरी सिंपल. एंड ऑल्सो यू कैन शेयर योर फीडबैक ऑन स्टॉकहोम डायरेक्टली. So, sir, anything do you have to add? Like, is there anything we should add before we end the session? Because I feel हमने BTST भी दे दिया. We had a profitable trade. We took on some queries. हमने आपकी personal So queries भी. So I don't think we have anything else we can take right now. anything if I'll want to add at last, it will be wish for happy weekend. That's it. So that's it, everyone. Thank you, everyone, and that's it from my side. Happy weekend. Enjoy. That's it. That will be all, guys. इस
ये हफ्ता हमारा काफी अच्छा रहा ओवरऑल आउट ऑफ आवर हाउ मेनी सेशंस 8 सेशंस क्योंकि थर्सडे को छुट्टी थी जनरली 10 सेशन होते हैं 8 से 7 सेशन में प्रॉफिटेबल जिसमें से 5 सेशन अनिकेत सर ने लिए थे एंड बाकी की 2 सेशंस में एक हमारा मधुर सर ने लिया था सॉरी शंभू सर ने एंड एक हमारे 3 एक्सपर्ट्स थे चंदन सर शिवांगी मैम एंड अनिल सर ओवरऑल द जर्नी फॉर दिस वीक हैज बीन ग्रेट आई होप जो लोग आज मिस किया आप उन लोगों को बताएं आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को लेके आएंगे नेक्स्ट टाइम ऑन दिस ट्रेडिंग एंड यू नो मेक सम मनी also guys please vote on the poll and share your feedback on stock I can see a lot of feedback and questions coming in आपका questions अगर हम यहाँ पे नहीं ले पा रहे हैं so please share it on stock we will take it from there along with your feedbacks and don't forget to vote on the poll it will hardly take 2 seconds that will be all thanks a lot Aniket sir thanks a lot for joining in and giving us a profitable report that will be awesome So yeah, thanks everyone. Goodbye.